नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण परमार है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुडेज दिस पर्टिकुलर इवेंट जहाँ पे वी आर गोइंग टू होस्ट so many guests, all the environment enthusiasts who are coming from all the different parts of India. आज का ये दिन कि जहाँ पे हम लोग ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड सस्टेनेबिलिटी, बिकॉज हमें ये प्लानेट को अगर बचाना है, हमें अगर ये पर्यावरण को बेहतर बनाना है, तो हमें जो पर्यावरण को अच्छा कर रहे हैं ऐसे लीडर्स है उनको उनसे इंस्पिरेशन लेनी पड़ेगी, उनको रिकग्नाइज करना पड़ेगा, उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। एंड वो काम 1 मिलियन एंटरप्रेन्योर्स इंटरनेशनल फोरम जो है वो कर रहा है। हम लोग दिस इज़ द सेकंड सीज़न और हम लोग ऐसे ग्रीन प्रेन्योर्स जो है उसको अक्रॉस द ईयर उनको हमारे प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करते रहते हैं, उनको सेलिब्रेट करते रहते हैं। एंड टुडे वी हैव द मिनिस्टर्स coming to appreciate these entrepreneurs, these leaders, and we have special categories for the change makers. Change makers कि ऐसे लोग जो अपनी लाइफ, अपनी पूरी लाइफ जो है वो ये पूरा जो प्लानेट है, पूरा जो वर्ल्ड है, इसको बेहतर बनाने के लिए उन्होंने समर्पित कर दी है। तो ऐसे लोगों को रिकग्नाइज करेंगे एंड इट इज़ गोइंग टू बी एन इवेंट विद लॉट ऑफ नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशंस एंड ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट शोकेस एंड इट इज़ गोइंग टू बी एक तरह से हम बोले कि एंटरटेनमेंट, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ सेलिब्रेशन, बट ऑन द अदर साइड इट इज़ ऑल्सो अ वेरी सीरियस टॉपिक। वाई? बिकॉज एनवायरनमेंट की जब बात करते हैं, प्लानट की बात करते हैं और जो आज की हालत है उसको देखिए, इट इज़ अ सीरियस टॉपिक एंड वी मेक श्योर दैट जो भी आज पार्ट ले रहे हैं ये पर्टिकुलर इवेंट में, दे टेक समथिंग एट होम एंड वो अपना सस्टेनेबल लिविंग जो है उसकी शुरुआत करें। With that, thank you so much. Myself, Praveen Parmar. Very happy to have you here. What is your thought on the program that brings you here? First of all, the whole concept of greenpreneur is definitely close to our hearts. हम सब है ना, सभी लोग, मैं तो ये कहती हूँ कि सभी लोग अपनी तरह से थोड़ी थोड़ी कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ जिए। और मुझे कभी कभी जैसे बट लेकिन फिर भी अभी 100% तक हम कर नहीं पाए, बिकॉज हम इतनी कभी कभी रैंडम चीज़ें करते हैं, जैसे कि वुडन ब्रश यूज़ करेंगे लेकिन फिर भी प्लास्टिक की बॉटल्स यूज़ करेंगे एंड देयर इज सो मच ऑफ वेस्टेज इन टर्म्स ऑफ द यूजुअल थिंग्स। तो अभी बहुत कुछ करना है, बट ये अवेयरनेस ही आ रहा है और इतने सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स के लिए काम कर रहे हैं एंड गवर्नमेंट से लेकर वीसी सभी इस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, विच इज़ वेरी इंस्पायरिंग, विच शोज़ दैट हम पूरी सोसाइटी साथ मिलकर हम ये चीज़ों के बारे में हमें लग रहा है, राइट, और हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं। इंडिया इज़ अ टफ कंट्री, हम आज भी डेवलपिंग कंट्री है, हम अब इतनी बारिश हो रही सो हम बहुत ज़्यादा लग्जरी नहीं ले सकते, बट हम पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इट्स अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव बाय डॉक्टर प्रवीण। मैंने उनके साथ पहले भी 1-2 इवेंट्स किए हैं। आई नो अबाउट हिम कि कैसे वो सारे एंटरप्रेन्योर्स को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके थ्रू एक एंटरप्रेन्योर दूसरे एंटरप्रेन्योर को जानते हैं और वो एंटरप्रेन्योर के लिए ना वो नेटवर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So such people play a very important role in connecting founders and entrepreneurs. हमको भी फायदा होता है। What you yourself is doing towards the environment? Yes. So मेरा startup is called Future तैयारी। Future तैयारी एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, although ये डायरेक्टली एनवायरनमेंट फ्रेंडली वैसा नहीं, एजुकेशन प्लेटफॉर्म है और सॉफ्ट स्किल्स। सो मेरी स्टोरी ऐसी है कि मैं खुद अहमदाबाद से हूँ, ठीक है। सो मैंने जब काम शुरू किया, मैंने मिस इंडिया एक्टिंग मॉडलिंग की ना, सो आई वॉज वेरी वेरी लो ऑन कॉन्फिडेंस पे बात नहीं कर पाती थी, एक्सपोजर नहीं था, इंग्लिश भी नहीं आती थी, कुछ भी नहीं। सो आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। जैसे जैसे मैंने अपने लाइफ में, करियर में मैंने मॉडलिंग की, एक्टिंग की, ये सब करी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ, आप सबको भी रियलाइज़ हुआ कि कैसे सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन और सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है कुछ भी आगे करने के लिए। टेक्निकल स्किल्स सिर्फ रख के हम आगे नहीं बढ़ सकते। सो मेरा पूरा स्टार्टअप इज़ अबाउट सॉफ्ट स्किल्स, ट्रांसफॉर्मेशन स्किल्स, बिफोर आफ्टर।
नॉट इन टर्म्स ऑफ सर्जरी बट एक्चुअली एक इंसान पहले क्या होता है और वो ट्रेनिंग लेके बाद में क्या बन जाता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन स्किल्स के बारे में. Okay. Thank you. Thank you so much. When I request Praveen Parmar sir, please welcome our sir with Momento. Thank you so much sir for joining over here, and I request કેમ ભેગા થાય છે આપણે? કોઈ મને કહેશે જરા, વ્યાપાર જગતના કાર્યક્રમમાં શેના માટે આવે છે? તમે લોકો નહીં બોલો તો પછી હું પણ નહીં બોલું. યસ યસ પ્લીઝ. આપે છે which is related to SDC matching goals. એના માટે આજે બધા એકત્ર આપ શેનું કામ કરો છો? હું મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્ટ છું. ઓકે ફાઇન. એનીવન મોર? યસ યસ મેમ. सर यहाँ पर हम सब इकट्ठे हुए हैं सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात Okay. करने के लिए. सस्टेनेबिलिटी यूएन के प्रिस्क्राइब 19 हमारे पास अलग अलग वो हैं, तो Okay. उसके सबके बारे में जैसे सस्टेनेबिलिटी यानी कैसे करेंगे? सस्टेनेबिलिटी कैसे करेंगे? डिफरेंट बिजनेसेस से सर. ओके फाइन. एनीवन मोर? यस. कितना गलती किया, एर्थ को कितना पोल्यूशन किया है, और रेक्टिफिकेशन के लिए यहाँ पे अपन जुड़ा है. एंड एनवायरनमेंट के लिए हमारा तरफ से जो है, घर से जो 82% केमिकल जो रिलीज हो रहा है, जो क्लीनिंग सिस्टम, उसको रिएक्टिवेट करते हुए बायो प्रोडक्ट्स को लॉन्च किए हैं. एंड दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म हैज गिवन मी द बेस्ट सॉल्यूशन टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ टू द मार्केट. एनीवन? करते हुए जो ग्रीन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एंटरप्रेन्योर होने चाहिए, और एक सोच लानी है हमारे कि हमें डेली लाइफ में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाए कि जिससे हमारी प्रकृति को बचा सके. यस. Three aspects. First is the solid waste management, then we have to go for the energy audit, and then the water. Because getting these, we can get a net zero building, and building resilience is the best way to get out of this. So in the coming years, if we don't do this, so we are in a bigger trap. We are sitting on the time bomb which are going to be exploded. Yes. Sir, I'm Arya Chavda, and I think that all of us greenpreneurs are gathered here so that we can come together to share our sustainable ideas with one another so that we can defeat climate change. Please give me some ideas. Some ideas, please. Sure. I write books, so I'm an author of 10 books, and all my books are published by UNESCO. Okay. And I write on environment, so I believe that the key things we can do to save our environment is by performing awareness and action together. By spreading more awareness to other people along with doing action at the same time, that can help save our environment faster. And please suggest 1 or 2 ideas. I believe that by doing afforestation instead of deforestation, we can increase more tree plantation, which could also decrease the amount of greenhouse gases in our atmosphere. खूप सरस कार्यक्रम આ કરે સેકન્ડ યર છે. સેકન્ડ કદાચ બહુ ઓછા લોકોને ખબર હશે કે મીડિયા મિત્રો બેસો તમને ખ્યાલ છે કે ક્લાઇમેટ ચેન્જ ડિપાર્ટમેન્ટ, કદાચ બહુ ઓછા લોકોને ખબર હશે કે ક્લાઇમેટ ચેન્જ ડિપાર્ટમેન્ટ દુનિયામાં અને એમાં ભારતમાં અને એશિયામાં પહેલું સ્ટેટ અને વર્લ્ડ વાઇઝ થર્ડ સ્ટેટ આપણું હતું ભારત કે ગુજરાત. દેશની વાત નથી કરતો, સ્ટેટની વાત કરું છું, જ્યાં ક્લાઇમેટ ચેન્જ ડિપાર્ટમેન્ટ દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે એમણે ક્લાઇમેટ ચેન્જ ડિપાર્ટમેન્ટ શરૂ કર્યો. એના માટે જોરદાર તાળી થાય. 2010માં એમણે ક્લાઇમેટ ચેન્જ પર આખી બુક લખી. હવે આપણે સવારથી સાંજ સુધીમાં કરીએ. હું જે કાર્યક્રમમાં આવ્યો છું એ કાર્યક્રમની અંદર
આપણે બધા છીએ તો સૌથી વધારે આપણે શું યુઝ કર્યું છે? સૌથી વધારે આપણે શું યુઝ કર્યું છે? અહીંથી આપણે ચેન્જ કરવાની જરૂર છે. અહીંથી આપણે ચેન્જ કરીશું કે આપણે જે વસ્તુનું માર્કેટિંગ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, જેનું માર્કેટિંગ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, એવી બીજી વસ્તુ આપણે ફૂલ એવી પ્લાસ્ટિક. આપણે શરૂઆત ત્યાંથી કરવી છે. મને ગાંધીજીને કોઈ મળવા ગયું હતું ને ગાંધીજીએ કીધું કે સાહેબ મારો દીકરો ગોળ બહુ ખાય છે ને ગોળ ના ખાય એના માટે સમજાવો. ગાંધીજી કીધું સારું કે 15 દિવસ પછી આવજો બગીને એવું કીધું. એવું એટલા માટે કે ગાંધીજી પોતે ગોળ ખાતા હતા. એટલે મારે એવું કેવું કે મારે મારી લાઈફસ્ટાઈલની અંદર પર્યાવરણ લઈ ક્લાઇમેટ ચેન્જ લઈ હું ચિંતા કરી રહ્યો છું. તો સૌથી પહેલા આપણે બધા લોકો ડાયરીમાં લખી નાખીએ કે લાઈફમાં કેટલી એવી વસ્તુ જેનો ઓછામાં ઓછું મિનિમાઇઝ યુસેજ કરીશું તો જ આપણે એન્વાયરમેન્ટ સસ્ટેનેબલ એન્વાયરમેન્ટને આપણે કેવી ટર્ન કરી શકીશું. અદરવાઇઝ શું થશે? એ કાર્યક્રમ રહેશે અને આપણી માઉન્ટ પબ્લિસિટી કદાચ નહીં થાય અને એના કારણે આપણો બધાનો જે મોટિવ છે એ મોટિવ સર થઈ જાય. તમે બધા જે સારો એફોર્ટ્સ કરી રહ્યા છો, આપણે સરસ એક ઓથ લીધા. મેં વાંચ્યું તો ખબર નહીં શું નામ કાકા પેલા ભાઈનું આપણે જગતભાઈ કાપાલા. જગતભાઈ ખૂબ સરસ કામ કરી રહ્યા છે. કદાચ મોદીજીએ પણ એમના વિશે મન કી બાતમાં એક સરસ વસ્તુ કરી હતી કે ભાઈ એ સ્પેરો સેવ સ્પેરો માટે કામ કરી રહ્યા છે. પ્લીઝ. એટલે ઘણા બધા અહીંયા લોકો છે કે જે લોકો વન નેશન વન અર્થ અથવા સેવ અર્થ માટે કામ કરતા છે. હું એક ખૂબ અલગ સબ્જેક્ટ પર કામ કરું છું જે રિલેવન્ટ ગ્રીન એન્ટરપ્રેન્યોર્સ છે. હું કામ કરી રહ્યો છું રિસ્પેક્ટ ફૂડ ઉપર. હું કોઈને પૂછું આર યુ હાઉસવાઇફ ઓર નોટ? આપણે રોટલી બનાવી તો કેટલો સમય લાગે? બેટા રોટલી બનાવી કેટલો સમય લાગે? હા કેટલી મિનિટ? 30 સેકન્ડ. ખાવશો ભાખરી રોટલી કેટલા કેટલી મિનિટ? 30 સેકન્ડ. એટલી હું એમ કહું છું પપીબેન મારી વાત સાથે સહમત હશે કે રોટલી બનતા બાજરીનો રોટલો બનતા ભાખરી બનતા 4 મહિના લાગે. પપીબેન હા કે ના? So next our winner, Mr. Mahavir Acharya, Hunarshara Foundation. के लिए लोगों तक पहचान पहुंचाने के लिए काफ़ी आपने जद्दोजहद किया, उसका आज रिजल्ट हम देख रहे हैं. और आपने काफ़ी सारे SDG गोल्स के बारे में बात की. We had placards, we had a note. So one take from Greenpreneur from your side for everybody to ponder about. Again, I repeat that Greenpreneur is a new concept, but it's about mindset. It is about the way you work. It is not only about the business, but it's about taking care of people, planet, profit and policies in all the aspects that we do. And that's what is required in today's world. And we have been practicing this since 1996, even before all these things were into picture. But I tell you, it is worth practicing. So, because I am personally have been practicing since 1996. The moment we started thinking about we have to earn money, we started with these principles. The journey is tough at times, but since now the world has started understanding it, but it is worth it. And ma'am, I think Boho Homes did a lot of work for this program, got some wonderful architects here on the stage who we could look into. So would you like to talk about Boho that? Homes became the power sponsor, especially for Sustainable Design Awards, because for us, the space that we live in has to be in such a way that gives peace of mind, and that is only possible if we are taking care of people and profit both, along with planet. So all these three aspects are very important. So that is where the Sustainability Design Awards were designed with this mindset. So all the 9 architects who are practicing in the field of sustainable designs were invited and they were felicitated. Thank you so much. Single largest manufacturer in India, non-chemical bioenzymatic products.
in home care division. Particularly this company all the way from Hyderabad here, why it has come? यहाँ जो environment है वो environment सिर्फ there is only one segment which is vacant, that is home care division. So coming to the your Ahmedabad, why I am saying your Ahmedabad, अभी हमारा प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद हमारा Ahmedabad बनेगा ही. So kindly help out. And the best suggestion and best message to the universities, when we think about the water, when we think about the organics, lifestyles and all, first we should think about the earth. If earth is right, the tree is right. If earth is right, the water is right. If earth is right, the pollution is right. So kindly help us to give the more strength to the earth layers by refusing the chemical products and by using the Russian bio products which is going to be a good environment.